Now we start introduction for the method of finding median graphically. With help of the graph, we can find the median of any class. The graphical representation, ग्राफ से दिखा हुआ रिप्रेजेंटेशन of cumulative frequency distribution is known as cumulative frequency curve और ऑगिव. कई सर बोलते हैं ऑगाई बोलते हैं, कोई सर बोलते हैं ऑजाइव बोलते हैं. ऑगिव भी राइट है, ऑजाइव दोनों राइट हैं. तो ग्राफ ऑफ cumulative frequency curve is known as cumulative frequency curve or ऑगिव. most IMP for MCQ short question. So what is the known of cumulative frequency curve? It is known as the ऑगिव और a ऑजाइव. cumulative frequency curve मेन टू टाइप के होते हैं. नंबर 1 मोर देन और इक्वल टू कर्व and second less than or equal to curve. Cumulative frequency curve main two type. Number 1 more than or equal to and second is less than or equal to. In more than or equal to cumulative frequency curve, lower limit of a class is taken on x-axis and cumulative frequency taken on y-axis. इन लेस देन, लेस है तो एक्स पे अपर लिमिट आएगा. इन लेस देन इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, द अपर लिमिट हियर लेस देन है तो अपर लिमिट ऑन द एक्स एक्सिस, एबो वाले के अंदर मोर देन है तो लोअर लिमिट ऑन एक्स एक्सिस, लेस देन तो अपर लिमिट में से ऑपोजिट के अंदर लेने का. एंड cumulative frequency on y-axis for the more than or equal to and less than or equal to curve. Now both curve intersection point of less than and more than is suppose pxy is a point. less than वाला ग्राफ and more than वाला ग्राफ intersect suppose in point p x y. then x coordinate, x का जो वैल्यू है, this is known as the median of a class. Here we see this type of graph. for more than type of the graph ऑगिव ये टाइप का आएगा. ऊपर से कम होता होता नीचे तरफ छोटा होता जाएगा. लेस देन तो लेस देन मोर की तरफ जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा. एंड मोर देन एंड लेस देन, दिस इज मोर देन ग्राफ, दिस इज लेस देन ग्राफ. इंटरसेक्शन पॉइंट इज दिस पी एक्स वाई. तो एक्स इज वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस. कोऑर्डिनेट ऑफ एम, put a perpendicular m on x axis x0. तो x is known as the median. The value of x is known as the median. This introduction is most important for the MCQ or a short question. Graphical representation of cumulative frequency curve is known as the ऑगिव. How many type of the cumulative frequency curve? Main two type of the cumulative frequency curve, more than or equal to or less than or equal to. More than or equal to cumulative frequency curve, what is taken on the x-axis? So lower limit taken on the x-axis and y-axis cumulative frequency. In lower than or equal to cumulative frequency curve is ऑगिव. What is taken on the x-axis? Upper limit is taken on x-axis and cumulative frequency taken on the y-axis. What is the x coordinate of a point of intersection of less than or more than of ऑगिव? This is known as the median. इतने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना. कोई डाउट हो तो मेरे को फिर से पूछना, मैं फिर से समझाऊंगा. थैंक यू.